Welcome back to Gear INFOTECH. The content for today is the all-new Royal Enfield Shotgun 650 over here. Now if we compare it with the Super Meteor, you won't see any differences. I never spotted any difference in this bike and the Super Meteor except for this and the sound of the exhaust. Now moving on to the ORVM setup, you can see the ORVMs over here in the piano black finish right here. The indicator setup, our badging right in the center. Telescopic suspensions in the front. Tubeless tires. The alloy setup, you can see they are quite nice. Disc brakes in the front and in the rear too with the ABS. Moving on to the leg guard, this is an accessory part. Fuel tank right here, the R badging and some graphing work. The bike is presently in the white color. Royal Enfield badging, twin 650 shotgun badging right here. The dual tone color, white and blue. Black exhaust tailpipe. Suspensions in the rear. Disc brakes right here. Side turn indicators. Tail lamp. Royal Enfield badging right here. Moving on to the engine setup, you can see this is a 650cc engine. The same present in the Super Meteor. Moving on to the handlebar itself. Headlight labeling options, pass options, indicators, horn option right here. Royal Enfield badging right in the center. Engine kill option and to start the bike. Hazard light option. And this is how the bike looks when it hits the ignition. This is very much similar to the Super Meteor. Fuel tank right here. Nice seat right here. You can see the white fuel tank with some blue graphic work. R badging right here. 01 badging. Royal Enfield badging right here. Or you can see the sticker. Nice seat right here. Solo seat. Twin exhaust tailpipes. So now moving on to the riding comfort of the Royal Enfield Shotgun over here. इस बाइक की राइडिंग कंफर्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे इस बाइक में ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं दिख रहे हैं सुपर मीटियोर से अगर मैं कंपेयर करूं तो। उतना ही ज़्यादा वाइड इसका हैंडल बार है, उतनी ही ग्रिपी इसके हैंडल्स हैं एंड साथ ही साथ अगर बात करूं इसके सीट की हाइट की तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो हाइट भी सिमिलर ही रखी गई है। बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंसेस इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं सुपर मीटियोर से अगर हम कंपेयर करें तो। जो मेजर चेंज मुझे देखने को मिला वो यहाँ पे हेडलैम्प में मैंने आपको जैसा कि पहले बताया एंड एग्जॉस्ट के लाउडनेस में, वो मैं आपको इसके बाद वीडियो के एंड में सुना दूंगा। बट अगर बात करें ऑल इन ऑल इस बाइक में जो सुपर मीटियोर से ज़्यादा जो चेंजेस मुझे दिखे हैं यहाँ पर वो इसके ग्राफिक के ट्रीटमेंट दिखे हैं जो इस बाइक को कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा मैच्योर लुक दे रहे हैं। एंड जब राइडर्स इसको राइड करेंगे तो एक वो मैच्योर और एग्रेसिव लुक के साथ जब ये बाइक रोड पे निकलेगी तो इसकी जो रोड प्रेजेंस होगी वो कहीं ना कहीं एनहांस हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं ये बाइक राइडर्स को और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बाइक रिकमेंड करना चाहूँगा।